أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So this is a live session for which is actually an interview preparation for a student who is by profession he's a pharmacist, but he's going for his interview at a German company. So we're just going to go through all of those things. So Abdul Rahman, tell me, what are you studying right now? What are the tracks that you've studied? You studied CAD, then you went to diploma in DevOps advancement. Diploma in cyber security, right? And then you did your DevOps as well. Yes, well, Assalamu alaikum warahmatullah. Yes, Faisal bhai, I joined actually Al Nafe last year in July 2022. And after joining, I first bought the subscription of CAT. At that time, it was a CAT. After that, I purchased the subscription of DevOps and then blockchain. And afterwards, in the January 2023, I took the subscription of AWS, SysOps, and cloud. And in April, I joined artificial intelligence track as well. All of these tracks, mostly 70% I have completed DevOps, and AWS I have completed as a whole. While artificial intelligence, just I told you that I have joined just a couple of weeks back. You're going through the courses right now. Yes. So you use the same resume that I developed for you, and then you're basically powering it up in terms of applying for the jobs, right? Yes, in the case, I actually, when I did my research in German market, I came to know that German market is specifically targeting for the person who are specialized in specific fields in the start of their career. That's why I tweaked the CV you provided me and inclined that CV towards more in DevOps and cloud, and applied. Which is good, but know one thing: when you go in and you're applying for this thing, there will be a statement that I'm going to tell you of how you have to introduce yourself, right? Yes, sure. One of the things that they're looking for is like, what are the benefits that they can accrue from you, right? Yes, exactly. What would you do differently for them? These are all the things, right? So by profession, you are a pharmacist, right? Yes, by qualification, you can say I'm pharmacist. By profession, inshallah, you will be a DevOps engineer. Yeah, by qualification. Yes, by qualification, you're a pharmacist. You did some work in pharmacy as well? Yes, I did. I did my first of all, I did my pharmacy as a retail pharmacist, and then as a pharmacist manager from 2014 till 2019. Afterwards, I joined e-commerce, some journeys, and then I came to know that there was no scope of that. Then and there was no career in that. What kind of e-commerce journey you had? The same thing people are doing in Pakistan and India, like Amazon selling? Yes, unfortunately. So you were also bitten by these guys as well, right? Yes. मैंने भी तुम्हें डसा है, हाँ? कितने पैसे तुम्हारे गायब हो गए? कितने हुए इसमें? चलो नहीं बताओ, छोड़ो. It's very difficult. Okay, so I can see this is a bank. Yes. ये बैंक जो है, this is a very specialized bank. And ये क्या करते हैं? What they do is they offer essentially key services as they relate to investment management, right? For companies, for basically pharmacists, for medical professionals, medicine professionals, right? Yes. That's what they're doing. So essentially, they're in the wealth management business, right? Yes, correct. They have been a very, very old player, more than 100 years, I believe, right? And I think that it's a very specialized service that they're doing. If I look online and search for them in terms of what they're doing and how they're doing, let me do that as well quickly. So this is a very, very old bank, I would say. Was founded in 1902, right? And they are in asset management business.
They're a subsidiary of one of the largest banks. And I'm just trying to see and read about them, what they're doing. The bank has mentioned a specific page with the name of history. If you scroll down their menu, and with the name of the tab name is your company as well. You can see both. Yeah. No, I mean, they have been in the business for a long time. They have lots of services. I'm looking at their services and whatnot, right? Okay, so Yes. here is your, I mean, if I have to see, and career, I'm looking at their career page, trying to see what they have right now. Accept everything, search for jobs. So this is how you have to approach them, right? Yes. If they ask you, explain to me, your career, what you're doing, so on and so forth, right? Yes. You have to start with your journey that by qualification, you are a pharmacist, right? But Right. by profession, yes, you did work as a pharmacist, but then you jumped into DevOps, SysOps, AI, blockchain, right? And over the years, I have worked, I was fortunate enough in terms of getting some very hands-on experience as it relates to DevOps. Did some very fantastic projects as it relates to ERP implementation, CRM implementation, ITIL implementation, designing processes. Essentially, if you talk about DevOps, then like I have worked in terms of streamlining and accelerating the software development and operations for various customers. I've also created processes to accelerate software delivery. And that can only be done through a combination of DevOps and SysOps and AI. AI is a new infusion that I'm doing nowadays. And you know that there's a big craze of AI going on within the industry. Everyone is going towards AI adoption. So there's a huge digital transformation renaissance happening within the industry. So I'm on the forefronts right now. I'm not right now in the cusp of basically implementing DevOps, SysOps, cybersecurity, blockchain, all through AI, right? How we can get a much more enhanced collaboration, accelerated delivery, improved security posture, all of these things. I'm also working. I've also worked as a part of DevSecOps, which is essentially creating pipelines which are continuously assessed and monitored in terms of making sure that they are secure and compliant, right? Right. From the infrastructure management aspects, I bring on expertise in terms of designing and architecting AWS solutions, right? Right. Even if it has to do with basically Azure, I can do that as well. But predominantly, all of my experience is Linux. In Germany, everyone uses Linux, right? When you go there, Right. you will see that. In Right. Germany and France, everyone is, predominantly everyone uses Linux within the corporate sector. Consumer sector, again, it's a different story. People tend to use things which are easier for them, but in the corporate sector, that's what they do. So you have to explain to them that, when it comes to implementation and when it comes to basically architect and designing, I can do all of those things for you because this is something I've done for, banks and financial institutes, so on and so forth, right? My Right. job has also been in terms of infrastructure management, infrastructure creation, management, all through open source. So predominantly, pretty much worked with from the oldest Linux version to the newest Linux version. CentOS 7, 8, and whatever the new versions are right now, we have used it. For the web application part, we predominantly use different versions of Linux, right?
So it all depends on what the customer requirements are. That's what we have done. But as I said, from the oldest, version of, I would say Linux, I've interacted with Linux 6, CentOS 6, CentOS 7, CentOS 8, and also the Stream 8 and Stream 9 as well. This is something I've worked on. Pretty much the whole RHEL base, if I would say, from the latest to the newest version. I've worked with with different versions of RHEL as well. The other thing I do is created blue-green architectures, because for many customers, like in this case, your client is a banking client, right? Right. So the most important thing is going to be disaster recovery planning. We need to have a blue-green architecture. Active passive or active active, right? Different services require different architecture, right? This is something I've done. I'm already working on a couple of these things right now as we speak. Security and compliance, huge thing, right, for banking customers, because there's a lot of PII, personally identifiable information, bank account numbers, privacy related information. So when it comes to PCI DSS, credit card security, ISO 27001, for ISMS, Information Security Management System, ISO 27017 for cloud security, 27018 for cloud privacy, CIS top 18 controls. You throw in everything, all the compliance requirements. I've done these things, right? I can implement, I can design, I can implement, I can architect, I can troubleshoot all of these things. The most exciting part nowadays that I'm working on is basically the infusion of AI. As you know, that you are a banking, this customer is a banking customer. So as you know, like your client is a banking client. This jo company तुम्हारा lady interview, is that who is that company? A recruiter or कौन है? Faisal bhai, he's the recruiter. He's third-party recruiter, and actually, I think he's a talent acquisition manager in some other company. And on the behalf of this company, he contacted They're me. looking for it. Okay. So you have to tell Yes. them, nowadays there's a huge renaissance going on in terms of AI, right? So in my existing role, this is what I'm doing. We are assessing and evaluating and designing solutions of how we can use AI as automated security service, customer service. Right. How we can use AI for fraud detection, how we can use AI for risk assessment and credit scoring, right? What kind of models can we use? AI models can analyze complex data sets and make accurate predictions about credit worthiness and risks. I mean, I'm sure like you guys are doing it, but we do it in a different way, like continuous risk assessment of the applications and the infrastructure. That is my job. Right. That's what I'm doing in terms of continuously analyzing the compliance, security posture, as per the business and compliance requirements, so that's what I'm doing. And then also user behavior analytics, how to detect insider threat within the organization, right? Right. So my job existing right now is essentially using all of these technologies, DevOps, SysOps, various technologies in cybersecurity, offensive security, all of these things in a way that facilitates businesses in terms of being efficient and effective, right? Right. What gives me the edge for this specific, basically bank is that I'm coming from the background as a pharmacist myself, right? Knowing this bank is essentially a company that prides itself in terms of providing services to a very specific industry sector, right? So knowing that gives me a lot of insight, information about what goes through the mind of a pharmacist or a medical professional or a doctor or or a surgeon or family medicine doctor or whoever that person is, right? Because these guys are always concerned about building up their wealth, right? How to maximize it and how to do all of these things. So, I take my job very seriously in terms of making sure that
I know exactly what the customer requirements are. And I know exactly what the compliance requirements are. And then based on the customer and compliance requirements, I design effective and secure solutions, right? So whether those are like, whatever your, whether there's a requirement for capital investment, or whether there's a requirement of private provisioning, or whatever the case is, right? All of this data goes through the systems, the applications. So if given the role, I would ensure that applications are continuously monitored. The infrastructure is continuously monitored. The infrastructure is evaluated continuously. The applications are secure and compliant in a continuous fashion. My essential role would be, how I see it, is to ensure that security and compliance is embedded within the fabric of the organization, within the DNA of the organization, right? So that's how I see myself in terms of making sure, so that when these customers comes to us, whether they are like coming in for wealth management or retirement provisions, or financing and credit or insurances, my role would be to ensure that the systems through which all these data is flowing, is being processed, transmitted, or stored, they are secure and compliant as per the business requirements. Now, there's another thing that I know, and then I bring on the table, is basically blockchain. Blockchain in the banking sector is being, used extensively in terms of building up transparency, security, decentralization. All of these are, key tenets of blockchain provides avenues and opportunities for much more effective cross-border payments, smart contracts with the, with these medicine professionals. Identity verification, we can do that as well in a tamper-proof system. We can create a tamper-proof system. Some of these systems that I've been working on, and then I've developed applications which can create secure tamper-proof systems for identity verification, reducing the risk of the identity theft and fraud. And then compliance and auditing, completely create a system where every transaction is recorded and cannot be changed, providing a tamper-proof audit trail that can make compliance easier for the regulators that Apple Bank is going through, right? So this is what I bring on the table. Wealth of experience, wealth of education, good background, extensive knowledge of basically, open source systems. I'm a heavy open source guy. I've been using them since my university days, I would say. And, developing applications and stuff not, but I jumped into this side some time ago. But since then, I've never looked back in terms of like the decisions I took and I made in terms of, following my passion of becoming an excellent DevOps, SysOps, and AI engineer, right? AI is changing the whole landscape. AI is empowering DevOps, SysOps, compliance, security, with lightning speed, right? So what I bring on the table that I can challenge you right now that none of the candidates bring on the table is the deep understanding and appreciation and experience of utilizing AI. This is what I bring on the table, right? So that is my high level, I would say, introduction about who I am, what I do, so on and so forth, right? Now, Abdurrahman, मैं तुम्हारा CV खोल के अपने सामने रखता हूँ. Let me open that quickly. So you have to mention all the things you have done as well. So they might ask you a question about from your resume. As I said, so since 2019, you've been working, right? So since COVID-19 came in, right? Yeah, okay.
So almost like 3 years, right? So almost like 3 years you have been working in the industry. So inshallah, I mean, just mention all these things. Your resume looks very good. I don't see any problems in that resume. Explain to them robust understanding of red teaming, cyber simulation, penetration testing, patch management, all of these things. Deep understanding and appreciation of Kubernetes, right? DevOps, SysOps, infrastructure as a code, all of these things. Ask me any question you have. Abdurrahman. Yes, Faisal bhai. As per my understanding, after going through their website or a couple of other organization, I went through their website. I came to know that there are actually a huge gap between their huge gap of DevOps strategies on their in their systems. Is I am feeling the same case with this organization I'm going to be interviewed with. Uh, because I am thinking that I will be the first guy of cloud or DevOps in the organization, because there are uh, uh, s- no DevOps or SysOps or even cloud uh, job even on LinkedIn or Indeed with this organization. What would be your stance on this? Well, it provides opportunities and then it also provides challenges. So there are two, it's a double-edged sword, right? Yes, तुम्हारे पास yes, opportunities भी हैं, तुम्हारे पास challenges भी हैं. Both of these things can happen. One of the things जो you have to understand, तुम्हें एक चीज याद रखनी चाहिए, वो ये कि ये organizations जो है ना सारी अभी digital transformation से गुजर रही हैं. They are going through the digital transformation right now, right? right, So in this journey, if you go to them and you tell them, okay, this is what you're trying to do, they will absolutely, that also absolutely provides you opportunities कि जिसमें तुम ना उनका अगर काम करोगे, progression जल्दी है. So there's a huge right, progression. yes, But at the same time, there will be a lot of resistance. So once you get in, then we can talk about how to navigate that minefield, right? right, Right now, if I go on their website and let me see, they have these different jobs. I mean, they have pretty much removed all the jobs. What have they done? Okay. So overall IT, there are 14 jobs in IT that they have put on their website. Let me quickly check them. IT tech leader, group leader. Okay, let me see that. Enterprise technical and cloud architect. No, there is a cloud. There is cloud. IT compliance and risk manager. IT security architect, there's there as well. Right? IT business focus on securities and treasury. No, there are certain things. Normally banks, they are very risk averse. Like they try to avoid the risk as much as possible because there are some very strict regulations in Europe. They're not like US. So agar tum isme jaate ho, if you go there, you will see they do a lot of work, right? In terms of making sure that they're really secure and compliant. Now, only downside is they haven't mentioned a lot about what technologies they're using. There are more than 400,000 health professionals can rely on us in every phase of life. I mean, इनका जो customer base है वो 4 लाख का है. Okay? So right, this is a huge, huge place. right, 1900 से बैठे हुए यहाँ पर, ठीक है ना? तो और right, अभी क्या चल रहा है 2023. So you do the math. काफी टाइम हो गया ना? yes, 1900 से अभी तक बैठे हुए. So I mean, these guys are pretty old in the market. Looking at the jobs that they have on their website, right? I can confidently say कि इनके पास जो है ना teams हैं. ऐसा नहीं कि teams नहीं है, because there is a team for cloud architect. ठीक है ना? They're right, using cloud-based IaaS, PaaS, and SaaS. If I show it to you, let me show it to you. Right? So they have these things. So you can see, यहाँ उन्होंने mention किया हुआ है. Enterprise में you transform the classic IT landscape in terms of individual systems into the future. So what this sentence means is you transform the classic IT. They are still very traditional architecture. They're going towards it. So that yes, opens doors for you. तुम्हारे लिए दरवाजा खुल right, जाए.
ठीक है ना? Right. Familiarity with OpenShift. So this is a Red Hat shop, Yes. right? Kafka, they're using big data clusters, right? Right. Something that we have covered in our big data, how to configure Kafka, how to do all of those things. हमने cover किया है इसमें. Database technology such as Oracle and Exasol. So नजर आ रहा है कि they have some of these things in place, right? अगर मैं इसको भी करता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, we translate that. They're not putting. So देखो ISO 27001, Also. CRC, all of these things are mentioned. TOGAF, you haven't read TOGAF, but I will be doing it. ISIS AP, you will be going through that in your cloud, because अगर तुम वो SCAD का देखोगे, right? SCAD के अंदर मेरी live classes हैं for you did this, right? But then you already did this as well. But then there is another part which is CCSK, ISIS AP, and CCSP bootcamp. So all of these things are remaining. और ये तुमने यहाँ पर है, देखो तुमने किया हुआ है, ठीक है ना? Right. सब चीजें डाली हुई है. So you Right. are like, you can say this statement with confidence that if someone asks you, what you can do, tell them, I would explain to them, that I have expertise. I have expertise in terms of ISO 27001, 27017, 18, COBIT, all of these key aspects and different controls and standards. But the difference is not only from the security perspective, but also from the DevOps perspective. From the implementation to the deployment, to the management, to the rollout, creating the CIOps pipeline, all of these things. I've done all of these things. So Right. because working at a consulting firm has given me this unique opportunity to ensure that I get my hands dirty in everything. Right. So that gives me the edge that you guys are looking for. So if you're looking for a one-man, army, then I'm your guy. Right. Okay. That's what I can. Right. Can I mention that I am going to apply a PCI DSS infrastructure in my consulting company where I am recently doing my work? Yes. वो तुम कर रहे हो ना? You're doing that, right? So you can say. Yes. So there's a big project that we are working on right now. I'm working on right now, which is like creating a whole infrastructure, a complete infrastructure, which is known as a greenfield. This is a greenfield opportunity for me. The biggest one I've got that I'm working on right now. Greenfield का मतलब है जैसे बिल्कुल जरखेज मैदान है ना, उसको कहते हैं. Right? So तुम बोलोगे, this is a greenfield opportunity for me, where I'm developing the architecture from ground up, in terms of meeting all the requirements from requirement 1 to requirement 12. Right. And let me tell you something. The same controls which are required by the banking industry, they are pretty much the same as the PCI DSS in certain ways, right? If we do a comparison, but there's a matrix that I've developed, which is the FFIEC, because when we work on in the existing fund, when we work on these things, the CIO has developed a framework. This is where you have to mention me, where where we match the FFIEC requirements with respect to PCI DSS and all these other customer requirements. So the FFIEC requirements, and I would say the German requirements, when it comes to security, risk management, controls, and all those things, pretty similar. What you can do is तुम ये कर सकते हो कि मैं देखो एक बताता हूँ what So I'm just trying to see, because मैंने German banks में काम नहीं किया. I don't know, so I'm just trying to see. BaFin के नाम से है. So in Germany, the Federal Financial Supervisory Authority, just like the FF, known as the BaFin, is a regulatory body responsible for overseeing the financial industry, including banks, insurance companies, and other financial institutes. तो बोलो कि
while Buffin does not have a specific framework equivalent to FFIC, just like in the US, it provides guidance and regulations that addresses cybersecurity requirements for banks. So Buffin works in collaboration with other regulatory bodies and industry organizations to establish cybersecurity standards. So bolo ki bhai, I reviewed the FFIC requirements. I mean, we work on the FFIC requirements. Now, what I was able to see was that the Federal Financial Supervisory Authority, known as the BaFin, I don't know how you pronounce this name, the Bunda Santatalt for whatever the case is, right? I don't know. You have to go in and see. Try to learn this. When you're sitting in front of them, try to read this name. If you can, come very, very handy, right? If you know their language and you can speak in that language, that will certainly help you. This is the body which works, the Federal Supervisory Authority, right? So how do you pronounce this? Let me see. Read in German. Let me check. Ried. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Ried. वही तो अगर तुमने याद कर लिया तो अपनी जबान भूल जाओगे ठीक है but yeah, I mean, try to remember this, ठीक है ना? Right. Just say just tell them, I may make a mistake, so please accept my apologies, and then just say what you have to say, like Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Ried. you can always break the word into different words, right? So तुमने उसको break कर दो, अगर तुम उसको break कर दोगे जैसे like this, तो तुम्हें इसमें आसानी होगी. You can do that like this, right? देखो मैंने इसको break कर दिया ना. So आधा पढ़ा. Bundesanstalt. तो Bundesanstalt बोला यार जो भी है तुमने गुंडा मत बोल देना उसको, ठीक है? So you have to be very careful with your words. Just tell them that I did some digging. I can tell you that FFIC requirements are pretty stringent now. I'm not saying that the BaFin or the Bundesscheiss or whatever, like जो भी इसका नाम तुम लोगे, they are the regulatory body, but they do consult and basically review the FFIC requirements as well, right? The IT security standards and the minimum requirements for risk management, the MA risk. I will send you these things. मैं तुम्हें कुछ भेज देता हूँ, ठीक है ना? The Basel Committee and the European Union regulations, all of these basically these different bodies, whatever regulations that they have, I understand these regulations. These are the regulations मैंने तुमको भेज दिया है, ठीक है? और इनका पढ़ भी लेना इसके ऊपर. Just read that. Try to memorize this name properly, ठीक है? Name properly memorize करने की कोशिश करना, ताकि तुम उनके साथ पढ़ सको. That will make them कि यार हाँ बंदे कोशिश करके आया ना. So फिर इसके बाद बोलना कि भाई देखो, most of this work I can do. Absolutely yes. This is all technical work. Developing solutions, securing systems. It's all open source. That's my wheelhouse. I can do all of those things. Absolutely yes. और फिर तुम उसके बाद उनको बताओ कि, and if given the opportunity, then yeah, I mean, I did my effort in terms of learning how to pronounce this name. So yeah, I mean, I'm young, and I'm ambitious, so I can learn German language. Just give me some time, because तुम्हें German language के time देंगे to get your blue card, जो भी मिलता है, जो PR का होता है, you have to pass your German का कोई test होता है. वो तुम्हें free में देंगे, भेजेंगे. बस जर्मन जबान में बात करो यार. किसी पठान से दोस्ती कर लो तो बोलोगे यार तुम भी जर्मन जबान बोल रहे हो यार, मुझे समझ आ रही है तुम्हारी यार, ठीक है? पठान आराम से जर्मन जबान बोल देता है, क्योंकि उनके जो वॉवल्स हैं वो काफी मिलते जुलते हैं ना. पठान सख्त है ना वॉवल्स, ठीक है? तो मेरा कजन था जो भाग के चला गया था यहाँ से पाकिस्तान से. वो 2 नंबर तरीके से चले आते ना, उससे चला गया था. फिर वहां पर वो काम करता था. उसने जर्मन जबान सीख ली थी. फिर उसके बाद वो फिर वहां से भाग के, जब उसको मौका मिल गया, यूके चला गया. फिर वहां पर काम कर रहा था. फिर अब काफी टाइम काम करने के बाद घूमता फिरता वापस पाकिस्तान आ गया, ठीक है? मतलब पॉइंट इज के यस, जो है ना, तुम कर सकते हो, ठीक है? इंशाल्लाह. अच्छा, अगर वो मुझसे पूछते हैं कि आपका जो है वो 30, 60 और 90 डेज में यानी क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और द कंपनी एम्बिशन, एक तो फेमिलियरिटी हो जाएगी सिस्टम के साथ में, ये कह सकता हूँ कि फिर कंपनी के टीम के साथ यानी किस तरह ये होगा. क्या समझा नहीं, दोबारा पूछो.
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो पूछते हैं कि 30, 60 या 90 डेज में तुम्हारा कंपनी के साथ यानी क्या गोल होना चाहिए, या व्हाट विल यू डू इन योर फर्स्ट 30, 60 और 90 डेज विद द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस गोइंग ऑन इन द कंपनी? बोलो, लाइक यू आर आस्किंग मी कि 30, 60, 90 डेज में तुम क्या करोगे? जी जब वो सवाल आएगा ना, जी। बुलाएंगे, फिर मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमको बता देता हूँ। Look, in the ऑलराइट। first 30 days, if given the opportunity, I can prove my worth in the first 90 days. The first 30 days, I will give you a plan, evaluate all the solutions, meet all the people. I will understand the people and the processes. The first 30 राइट days, meet all the people, right? Create like राइट a detailed map of who's in the organization. Then in the next 30 days, which makes it that we are now reaching the 60-day count, right? The first month, the second month, third month. The first month, meet all the people. The second month, build relationship with these people, and then understand the applications that these guys are using, the processes, right? What are the processes that they have to comply with, or they are required to comply with? And the last, and in the third month, I will then perform an assessment to understand what is the current posture of the organization, where the organization is standing. So if my given role is DevOps, then I will focus on DevOps. If my given role is basically SysOps, then I will focus on SysOps. If it's a combined role, then combine. If it includes DevOps, SysOps, and cybersecurity and all these things, then yes. But one of the things that I would always put on the table is adoption of AI, whether it's OpenAI or Bard. I'm sure that you guys are going to go use Bard because Google has not even made it available in European Union, because everyone knows that when it comes to data, Google is the dirtiest company in the world, and it's no secret that they don't do any of these things, right? राइट So that's how you have to go down, right? So I would say stay away from Google, but like we can use OpenAI, train the model, use it ourselves, do all of those things. You can do all of those things, right? That's how I will try to implement. But again, तुम्हें जितना DevOps में पढ़ा है, जितना SysOps में पढ़ा है, सब चीजों को लेकर आओ। अगर वो बोलें कि आर्किटेक्चर कैसे बनाओगे, तो तुमने डिप्लोमा इन SysOps में सारा पढ़ा है ना, ठीक जी है? जी जी बिल्कुल। वो तुम सब बताओ उसको कि भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना? जैसे उसके अंदर पूरा का पूरा जो है ना, सब दिया हुआ है, ठीक है? जी उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स। जैसे उसके अंदर देखो, यहाँ से उन्होंने दिया हुआ है ना, तो तुम उसको पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि भाई फॉर्म लाइक इफ आई बताओ उसको कि अभी जो तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए, तो जी तुम उसको बताओ कि भाई आई एम क्रिएटिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज बाय द वे द इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट जो अभी इंटर्नशिप 15 जून से स्टार्ट हो रही है ना, जी दैट जी विल बी डूइंग, जी ये तुम कर रहे हो, ठीक है? जी तो राइट ये सब चीजें तुम्हें आती हैं, जी ठीक है जी ना? बिल्कुल। एवरीथिंग जी तुम्हें सब कुछ आता है। जी तो बोलो भाई, जी फ्रॉम planning to designing to architecture to deployment to management, the whole 9 yards, I can do it. This is what I do, right? जी। So ये तुमने बताना है। That's it. पूछो, सवाल पूछो, और तुम्हारे जहन में क्या आता है? नहीं फैसल भाई, अभी तो यानी यही है ज़हन में। तो अभी इंशाल्लाह पहले यानी फ्राइडे को उसने टाइम दिया था, लेकिन उसने रीशेड्यूल किया है, तो मंडे को ले गया है हाँ, वो बस। बात करेगी, हाँ जी ठीक है ना? एक चीज मैं देख रहा हूँ, जी जर्मनी में तमाम जो बैंक्स है ना, वो PCI DSS को फॉलो करते हैं, लाजमी है, ठीक है ना? बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं ना, ठीक है? जी जी तो जी वो करते हैं। नाउ इनके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट सी दैट ऑन देयर वेबसाइट, बट आई एम नॉट श्योर, राइट? अगर मैं इनकी वेबसाइट देखूं, आई डोंट सी इट, राइट? इट सेज डॉक्टर, फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आवर सर्विसेज। अगर देखें, अकाउंटेंट कार्ड, हाँ ये करते हैं, कुछ है इनके पास। क्रेडिट कार्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है इनके जी पास, है तो दे है, सो दे डूइंग इट। सो ये जो इशू कर रहे हैं, वो तो या तो PCI DSS वीजा का होगा या मास्टर का होगा, दोनों में से किसी एक का होगा ना। जी Apple Classic Card for students, Gold Twins, Gold Card Plus, Platinum Card Plus, कर रहे हैं भाई, ये लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर लोगो कौन सा है, अभी ये देख लेते हैं।
तस्वीर कैसी है, वीजा है, कौन है, वीजा है, ठीक है, वीजा वीजा और मास्टर दोनों दे रहे हैं, सो बोलो कि भाई वीजा मास्टर PCI DSS, इट्स इन द बैग. सो ये बोलना कि one of the things I would do would be, the most important thing would be to sit down with your, architect, cloud architect, enterprise architects, cloud guys, application guys, everyone, and design a framework which is known as the Unified Risk and Compliance Framework, where we test one control or design one control, and then we satisfy all the key requirements. So whether those requirements are related to, basically, ये चीज बड़ी important है, ये चीज तुमने लाजमी बोल दी है, ठीक है ना? Whether those requirements are as per the BaFin, the vendor word जो भी था, ठीक है ना, जो जी 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 or as per the IT Security Act, उसका भी एक अलग सा नाम है, Schneider Chakras, पता नहीं जो भी है, ठीक है ना? Or the minimum requirements for risk management, the MAR risk, right? Or the Basel Committee, the BCBS recommendation, or the European Union regulations. We will have one control. That's one control will satisfy all the key requirements. This is something I will bring on the table because that's how we do our business in my existing company, which is the most effective way, because then you don't have to worry about, oh, what happened to this, what happened to that, because we then have an omni-channel view of everything in front of us. Right. That is the most important aspect. Right. और अगर वो यानी पूछते हैं कि जिस कंपनी के साथ यानी आप कंसल्टेंसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो PCI DSS का जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, तो क्या आप उनके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे या क्या, यानी किस तरह का क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, देन बोलोगे it depends on the contract. राइट. क्या मैं ये कह सकता, जी जी श्योर, Sorry, मैं खजूर खा रहा था. जी जी प्लीज. So if the contract says that I can continue doing moonlighting there, then yes, I would do it. If the contract says no, then I have to completely disconnect myself from that company. तो क्या मैं ये उनको कह सकता हूँ कि अगर मैं वहां पे काम कर रहा हूँ तो इसका बेनिफिट जो है वो इस कंपनी को तो डायरेक्टली हो ही रहा है, तो देयर इज नो हार्म? नहीं, ये इनके ऊपर छोड़ दो. राइट. समटाइम्स कंपनी NDA साइन कराती है, बोलती है यार यहाँ की चीज वहां में शेयर करना, वहां की चीज यहाँ में शेयर करना, सब चीजें होती है ना. तो तुम एम्फेसाइज करना ये जो मार रिस्क और ये सारे जो ना IT सिक्योरिटी एक्ट हो गया, GDPR हो गया, यूरोपियन यूनियन का हो गया, ठीक है ना, बैंकिंग रेगुलेशंस हो गई, इसके ऊपर बात करना, बेजल हो गया जो मैंने तुमको भिजवाया ना, ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तुमको ना किस तरीके से जो मैंने स्टेटमेंट शुरू में बताई थी वो लिख लेना सारी, SysOps का क्या रोल है, ठीक है ना. और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने तुमको बताया था कि DevOps in banking, in the banking industry part, I can create processes for accelerated software delivery, enhancing collaboration, improving security. These are the key aspects I can do, making sure that the security is embedded within the application and the fabric infrastructure of the organization. On the SysOps side, in the banking, I bring strengths in terms of infrastructure management, disaster recovery planning, security and compliance. From an AI perspective, this is a completely biggest plus point I have that I can believe none of your candidates will have, is basically utilizing AI to manage everything else, right? In an automated fashion, fraud detection, risk assessment, continuous risk assessment of the applications, of their infrastructure, all of these things, insider threat management, there's a lot of things. And then finally, one of the additional, feather in my cap is blockchain, right? I can participate that in terms of utilizing blockchain for the security and functionality of the business. So I bring all of these things on the table, right? Plus my knowledge of creating unified risk and compliance framework, where you have one framework to create and manage everything else. That's it. Right. और कोई चीज मेरे जहन में नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है तक का, जी, सोचो, बैठो, देखो, समझो क्या है, ठीक है ना. और क्या चीज तुम्हें नजर आती है, उनकी जॉब की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर देखो, ठीक है, वहाँ काफी जॉब्स आई हुई है. जी जी. वो जॉब्स दिखा रहे हैं बहुत सारी, अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी जॉब्स नजर आएंगी वहां पर. अगर मैं तुम्हें दिखाऊं मैंने क्या किया,
कि मैं इसकी वेबसाइट पे गया और सब्जेक्ट एरिया पे चला गया ना मैं, और मैंने वहाँ आईटी सेलेक्ट कर लिया, ठीक सही। है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्राइवेट कस्टमर से अलग है। तो फिर मेरे पास ना आईटी में सारी जॉब्स आ गई। देखो सबसे ज्यादा जॉब्स ही आईटी के अंदर ही आईटी में है। जी, 14 सही 10 कह सेल्स प्राइवेट कस्टमर्स, ये जो है ना, ये तो सेल्स वाले ना सारे, ठीक है। जी, लेकिन देखो डेटा मैनेजर है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, डेटा वेयर हाउस का डेवलपर है, ठीक है ना, डसलडॉर्फ में। तो मैं आई थिंक यहीं पर ही हो गए शायद, ठीक है। यहाँ मेरे क्लोन। दोस्त काम कर रहे हैं। जी, नियर टू क्लोन सिटी कह रही थी वो के। आई थिंक दिस इज क्लोजर टू क्लोन सिटी, आई थिंक, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट है यहाँ पर, इंटरप्राइज टेक्निकल एंड क्लाउड आर्किटेक्ट्स हैं, इनके पास टीम्स हैं, कंप्लायंस मैनेजर भी है देखो, ठीक है। जी, कंप्लायंस मैनेजर की जॉब देखोगे तो वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, और वो भी इसी में काम कर रहा है। देखो देखो बीए आईटी में है ना, माँ रिस्क, देखो ये आ गया ना, जी, मैंने क्यों भेजा, ठीक है ना। कोविड आ गया, बीएसआई बेसिक प्रोटेक्शन आ गया, आईएसओ 27000, आईटेल आ गया। बोला आईटेल का मैंने भी पूरा प्रोजेक्ट किया, तुमने किया ना भाई, ईआरपी नेक्स्ट जी, जी। किया कि नहीं किया? ईआरपी नेक्स्ट पे ही किया है, तो आईटिल का सारा इंशाल्लाह ले लूंगा मैं वो। बस तुम सायरा से बोलो, सायरा बहन, वो फैसल भाई कह रहे थे वो कौन सी लिस्ट है जो सारी आप लोग पॉलिसीज बना रहे हैं। मैं तो आपका अंदर का आदमी हूँ ना, मुझे प्लीज जी, इसके नाम दिखा दें, वो आपको जी, दिखा दें, शी विल शो इट टू यू। अच्छा, जी, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है ना, देयर इज नथिंग एल्स, जी, और कुछ तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। जी, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, डरो किसी से भी नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाहुम्मा आमीन। जब लग जाओगे तो फिर तुम पीछे काम करते रहना, मसला थोड़ी है कोई, जी, इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह, ना। इंशाल्लाह। वरना नहीं, जी, तुम बिल्कुल। अपना काम करते रहो, ठीक है। जी, इंशाल्लाह। बिकॉज तुम यहाँ पर लर्न कर रहे हो, दिस इज, ये जो जी, इंटर्नशिप है ना, ये तुम्हारी उस वक्त तक एक्टिव है जब तक तुम्हारी सब्सक्रिप्शन एक्टिव, जी, ठीक है। सही है, तो जी, तुम करते रहो, तुम्हें मना थोड़ी है किसी ने, सही है। जी, वो तुम जी, सारे काम वहां जाके इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, और तो कोई नई चीज तो जी, नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी, मेरे नजर में अभी जर्मनी ने ना बहुत सारे वो वर्क परमिट्स खोले हैं, ठीक है ना। तो हाईली जी, स्किल्ड के लिए ना वो अ, उन्होंने पूरा वर्क परमिट स्कीम निकाली है, ठीक है ना। हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स का उन्होंने पूरा पोर्टल बनाया है, ठीक है ना। तो वो फॉरेन फॉरेन से वीजा प्रोसेसिंग जो है ना, उसकी टाइम जो है इसका, आई थिंक वो कितने टाइम में होता है, 1 to 3 months, 4 वीक्स में कर देते हैं वो लोग ज्यादातर, जी, 4 वीक्स में हो जाता है, ठीक है। जब तक वो तुम्हारी तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हारा काम हो चुका होगा। पाकिस्तान में बिजी है ना इंशाल्लाह। जर्मनी की, जी, जी, है। बस खत्म, ठीक है। तो 30 days लिखा है, 30 days इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंशाल्लाह। जी, जी, इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, बस जाओ कॉन्फिडेंस के अल्लाहुम्मा साथ जाओ, मेहनत करो। एग्जाम निकालो ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, वो जो तुम कह रहे थे ना, क्यूबरनेटिस का एग्जाम निकालो, ठीक है जी, ना। जी, इंशाल्लाह मैंने निकालना है फैसल भाई, वो उसको पास 12 को करो, है। और ना तुम ना एडिशनल जो तुम्हें जमा करानी है वहां पर, वो तुम्हें मैं सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि तुम तो सब पढ़ रहे हो ना, कर भी रहे हो जी, सब। जी, जी, तो जी, ले इंशाल्लाह। ले जाना हमसे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है फैसल भाई, जज़ाकल्लाह। चलो बारक बहुत अल्लाह शुक्रिया, फीक। जज़ाकल्लाह। बहुत मैं एक शुक्रिया दो फैसल भाई। सवालात ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी शावे साहब, बोलिए, आपका सीवी मेरे पास है, मैं इसके बाद भेज रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाईजान। आपकी आवाज़ कम आ रही, बहुत जोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा फैसल भाईजान, मैंने दरअसल एक तो वो सीवी का मसला था, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको डीएम भी किया था व्हाट्सएप पे। मेरा सवाल ये था, मुझे ना एक तो 2-3 कंपनीज की तरफ से ना उन्होंने मेरी सीवी चेकलिस्ट की हुई है, शॉर्ट लिस्ट की हुई है, और मैंने ये पूछना था कि बिलफर्ज अगर कोई कंपनी है वो तकरीबन 2 से 3 लाख का पैकेज आपको दे रही है, तो बंदा अपना प्रीवियस कितना बताए? प्रीवियस क्या बताए, प्रीवियस सैलरी क्या थी? जी जी, क्योंकि वो एक तो पूछते हैं ना एस्टिमेट कितनी है और प्रीवियस कितनी है। बोलो भाई, देखो यार, देखो बोलो, अगर मैं आपको अपनी एस्टिमेट बता दूं, ठीक है, हम्म। तो मुझे इसमें जो है ना क्या फायदा होगा, ठीक है। जी जी, अगर मैं आपको अपने एस्टिमेट बता दूं कि भाई ये मेरा एस्टिमेट थी, जी तो जी। फिर आप लोग मुझे लो बॉल करेंगे। द रीजन आई एम सिटिंग हम्म। हियर इज बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद माई प्रीवियस एस्टिमेट। हाँ जी, क्योंकि इससे पहले मैं एज अ लिनक्स सिस्टम एडमिन की ना जॉब कर रहा हूँ, तो जब मेरा डेव्स ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट हुआ है, तो मैंने फिर डेव्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो 3 जगह से मुझे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दी है कि हमने आपकी लिस्ट क्या नाम है सीवी शॉर्ट लिस्ट कर दिया। तो
आपसे जल्द हम रब्ता करेंगे। जब तुम्हारे पास अभी तुम्हारा सीवी आएगा ना, फिर तुम शॉर्टलिस्ट नहीं, फिर तुम्हें कुछ और कॉल आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक तो है। मैं दरअसल एक 2-3 और जगह थी, वहाँ पे मुझे सैलरी पैकेज अच्छा लग रहा था, तो मैं वहाँ पे अप्लाई करने ही लगा था, तो आपसे रब्ता हुआ है। हाँ, तो जस्ट आपने वेट कहा वेट, कि देखो जस्ट वेट। जब इंसान वेट करता है ना, इसने अब्दुलरहमान जो है, इसने बड़ा जी वेट जी किया। इसको मैंने कहा सब्र करो सब्र जी करो, उसको जब दे दिया तो ये बड़ा माशाल्लाह स्मार्ट आदमी है। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है ना, जी स्मार्ट आदमी है। तो इसने इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज किया, सब कुछ किया, और अभी इसको करके आगे जा रहा है ना ये। सो इट ऑल जी जी डिपेंड्स कि जब तुम्हारे हाथ हम्म, में वो आ जाए तो तुम उसको ऊपर कैसे काम करोगे। बस जस्ट बी ठीक है पेशेंट। इससे भी बात करो, तुम्हारे पास का नंबर है ना। जी जी। नहीं, इससे ये भी बात अब्दुल करो। भाई का। हाँ, किसका नहीं, अब्दुल रहमान भाई का। कह रहे हो? Here's what I found ये about Barkero. ये जिनसे Barkero भी is a आपकी बात। 1970 सॉरी यार, ये पता नहीं क्यों वो चलना शुरू हो गया। क्या कहते हैं उसको, सीरी का क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। ये जिनसे भी आपकी बात हो रही थी, इनका नंबर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, इनका नंबर नहीं है मेरे पास। अब भाई इसको अब्दुलरहमान, इसको जरा मैसेज कर दो। इसका नाम अलग है, अब्दुलरहमान। सारे सारे अब्दुलरहमान है यहाँ पर। मैंने कहा नाम बदल कर आओ, जब तुम्हारी जॉब हो जाए फिर तुम सामने आना। ठीक है ना। ठीक हो गया। ठीक है ना, ठीक, तो इंशाल्लाह। तुम उस ग्रुप में ओके। शायद बैठे हुए, तुम्हें बता देगा। ठीक है। ठीक हो गया। तुम्हारे इलाके का ही है भाई, तुम लाहौर के हो ना तुम भी। मैं वैसे तो गुजरांवाला से हूँ, लेकिन आजकल तो लाहौर हूँ। हाँ, तो गुजरांवाला लाहौर सब पंजाब में ही है ना यार। हाँ जी, पंजाब में। हाँ तो बस ठीक है, सही है यार। ठीक है। इतना असल वजह एक कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो, मैं गुजरांवाला से हूँ। एक सिंप्लीफाई करो छोटा यार, सा सवाल सिंप्लीफाई। था। ठीक है। वो वही एजुकॉल को लेके मैंने थोड़ा सा अपनी कंफ्यूजन दूर करनी थी। तो आपसे हाँ, शायद बात थी। मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था, अभी मैंने डेवऑप्स कंप्लीट किया है, तो इसके बाद मैंने बाय करना है वो क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक। तो उसके बाद फिर मैंने भी ये इसी तरह 3 एडवांसमेंट ट्रैक करने हैं। तो मैंने ये पूछना था कि आया हम लोग एक ही ये एग्जाम देंगे लेवल 6 का? अगर आप लेवल 5 को पढ़ेंगे, लेवल 4 पढ़ेंगे, लेवल 3 पढ़ते हैं, तो आप लेवल 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो लेवल 3 की एग्जाम फीस देंगे, एग्जाम चले चले जाएंगे। ठीक हो अगर गया। आप लेवल 4 का देना चाहते हैं, आपने लेवल 3 पढ़ लिया और ने कहा मैं लेवल 3 का एग्जाम नहीं दे रहा, मैं लेवल 4 में एडमिशन लूंगा। जैसे तुमने पहले कैट लिया, फिर तुम डेवॉप्स ले लिया, राइट। तो तुमने कहा जी कि मैं जी। ये पढ़ के डेवॉप्स का एग्जाम दूंगा, फिर तुमने कहा नहीं यार, लेवल 4 का मैं नहीं कर रहा, मैं लेवल 5 का कर रहा हूँ। मैंने सिसऑप्स हाँ भी हाँ, बीच में डाल दिया। ठीक है, मैंने वो भी ऐड ऑन ले लेता हूँ। तो फिर जी तुम्हें जी। डेवऑप्स के ना, वो मतलब कि ना, उसकी लेवल 4 की एग्जाम की फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेवल 5 की देनी पड़ेगी। फिर तुमने कहा यार लेवल 5 से नहीं, मैं लेवल 6 पे भी जाना चाहता हूँ। तो मैं हाँ लेवल हाँ, 5 भी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने डेवऑप्स सिसऑप्स पढ़ लिया, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ लिया, फिर डेवऑप्स सिसऑप्स भी पढ़ लिया, अब मैंने इसमें एआई भी डाल दिया। अब ये बन जाता है जी लेवल 6। बिल्कुल। तो क्या यार नहीं, अब मैं लेवल 5 के नहीं, लेवल 6 के, तो लेवल 6 तुम इम्तिहान देने जाओगे, लेकिन वहां हम्म, तुम्हें लेवल 3, 4, 5 के सवालात मिलेंगे, लेकिन वो टॉपिक्स के सवालात उनके हिसाब से होंगे। मैं ठीक है। समझ गया हूँ ठीक जो है भी ना। है। तो जी जी। एडवांस लेवल का हो जाएगा ना। तो उसके हम्म, क्वेश्चंस भी डिफरेंट है। हमारे पास इस वक्त जो क्वेश्चंस हैं, वो हर लेवल, एक टॉपिक है ना, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के बिल्कुल। लेवल 3 के क्वेश्चंस अलग डिजाइन हुए हुए हैं, लेवल 4 के बिल्कुल अलग हैं, लेवल 5 के हम्म, बिल्कुल अलग हैं, लेवल 6 के बिल्कुल अलग हैं, और लेवल 7 हम्म, के अलग है। लेवल 7 से आगे हम नहीं गए। लेवल 7 इज द लास्ट बिल्कुल। लेवल। लेवल 7 के आगे ठीक। लेवल 8 होता है। पीएचडी हमें नहीं जाना, हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वो पीएचडी बहुत सारे हैं यहाँ पर, उसका मतलब होता है जी। फिरा हुआ दिमाग। ठीक है। सही है। और वो हाँ सारे ऐसे जी। ही घूम रहे होते हैं और बहुत यानी कि लोगों को तंग करते हैं। वी डोंट वांट टू क्रिएट मोर फिरे हुए दिमाग। ठीक है ना। जी। सही है। देखिए, वो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो फ्रीज करवा दी थी। तो मैंने अपना माइंडसेट ना सारा अल्नाफे की तरफ तो कर तुम दिया था कहाँ कि पर, अब कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? वो नहीं जो गैम्बिया में है, साउथ अफ्रीकन, बिलाल फिलिप्स, डॉक्टर बिलाल आई फिलिप्स। एस क्या नाम है, आई इंटरनेशनल ओपन एस क्या यूनिवर्सिटी, नाम, IOU। आई क्या नाम है, IOU। IOU। इंटर जी जी। हाँ, वो इंटरनेशनल ओपन बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत अभी नेक वहाँ पे आदमी है, मेरे। बिलाल फैज बहुत नेक आदमी है। हाँ और हाँ बिल्कुल। जबरदस्त आदमी है, हाँ माशाल्लाह। तो बहुत अभी वहाँ पे जबरदस्त। मेरे 5 सेमेस्टर हुए थे। तो मैंने आपसे ही मशवरा लिया था, तो मैंने ना वो फ्रीज करवा दी थी अपनी डिग्री ना। तो फिर मैंने अच्छा, अपना सारा ध्यान ना ये अल्नाफे की तरफ दे दिया कि मैंने अपना इंशाल्लाह लेवल 6 को तो अचीव तुम्हें करना कितना टाइम लगा जॉब पकड़ने में? है। फैसल भाईजान, जो मेरी पहली जॉब थी ना, वो तो 4 महीने बाद ही पकड़ ली थी। नहीं यार, यहाँ पढ़ने के बाद? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे तो पास मैंने आए थे, आपको अपनी सारी। तुमने मुझे फोन किया था कि मैं और मेरा भाई और मेरा कजन हम सब मिल के ले रहे हैं, आप डिस्काउंट दे दें, कुछ इस तरह से था ना। तुम थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम 3 लड़के थे, अवेज, शवेज और अली। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तीनों भाई हो, कजन हो, क्या हो? अवेज मेरा बड़ा भाई है, जो अली है ना वो हमारा दोस्त है। तो वो कहाँ पर है अभी, क्या हो रहा है? अली है तो वो बीच में वो कोई मसला बन गया था, उसने तो स्किप कर दिया था। लेकिन जो अवेज है ना,
वो साथ-साथ लेके चल रहा है। वो भी डेवऑप्स कर रहा है और उसका जो कैट है ना वो 90% हुआ है। तो वो भी अब जॉब के लिए ना सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अच्छी बात मेरी है। जो जो मेहनत करता है भाई वो आगे निकल जाता है, जो नहीं करता उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूंगा। कल बोल रहा हूँ, ठीक है। सैटरडे के दिन मुलाकात करूंगा। सैटरडे के दिन हमारा बहुत बड़ा सेशंस है ऑल पाकिस्तान इंजीनियर्स के लिए, तो इंशाल्लाह फिर वहां पर मुलाकात करेंगे। ठीक है, अच्छा फैसल सुभान भाईजान अल्लाह एक छोटी-सी बेटा। बात। जी जी बोलिए। वो जो आपने बताया था वो जो डेवऑप्स टीम में ऐड करने के लिए। यू विल नो, आपको ऐड कर दिया जाएगा वहां पर। ये अब्दुल रहमान के साथ ही तुम हुँ, काम करोगे। अब्दुल रहमान से बात करो। ठीक हो ठीक है, अब्दुल रहमान के हुँ, आखिर में नाम में बशीर आता है, बशीर। ठीक है ना, वो ये बशीर है, नंबर सेंड बशीर कर नहीं है। अच्छा, बशीर है देता हूँ। यार। ठीक है ना, ठीक है ना, वो ठीक बशीर हो ना गया, बुलाओ, क्या कहते हैं उसको पंजाबी में। ठीक है, वो वाला बशीर है। ठीक है, कैसे कहोगे ठीक हो पंजाबी, गया। कैसे कहोगे? अ, पंजाबी में तो तुम्हें पंजाबी नहीं बशीर आती? वैसे आती है लेकिन बशीर तो एक उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू नेम है। हाँ, तो बशीर ना बुलाए कैसे कैसे बोलेंगे? वो बशीर और बशीर बशीर है गोरा। और देखो यार, तुमने खुद बोल लिया। ठीक है इंशाल्लाह, चलो इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।